So we'll be starting 2 minutes from now. First game. Two umpires who's going to control this game, Mr. Manzoor and Mr. Niaz. Official scorer, Mr. Rauf. And we are live. Shreelive do not forget to subscribe to this channel. You are live now from Dynamic Sports Ground. You can watch these actions from anywhere. Yes, here we go. We have the live action. Shreelive channel brings you the live action from Dynamic Sports Ground. Getting ready for the first match, Asian Cricket League Season 2, brought to you by Premier Techno Media, powered by Just Us and Auto. Got plenty of sponsors for this tournament. Thank you so much for all their contributions. We have the two opening batters. CCSU Warriors, two opening batters, Khalid Pathan and Salim Gul. And Afzal is going to start the proceedings from Black Cat. So all set to go. We are live here. Shreelive channel. First ball. Umpires are ready to go. Afzal to start the first over. Here we go. Asian Cricket League Season 2. The first ball. Gentlemen, may I have your attention, please? That's the first run of Asian Cricket League Season 2. Winning the toss, the captain of CCRC Warriors, Irfan, straight away elected to bat first. Two opening batters, Khalid Pathan and Salim Gul. Another good shot through the gap. Chance. A big chase there, and that's the first boundary. Well driven as Yakin the pace of the delivery, and handsomely driven to the covers. What a good shot it was. Perfectly executed one. The boundary number 1 in Asian Cricket League Season 2. From this man, Khalid Pathan moved to 6 from just 2 with a boundary. Two solid opening batters to start the proceedings in this tournament from CCRC Warriors. 6-4 no loss.
I wanted to try towards the mid wicket. It's a very well driven, executed delivery, completely beaten outside the off stump. Patan looked really good when he was playing the shot towards the covers. Now on this occasion, it's a good comeback by the bowler. And again, just maybe a small nick, cuts, no run given. It's a dot ball as well. So after conceding that boundary, it's a good comeback by Afzal. The opposition team captain has decided to bat first, and they will be looking for big runs up front from the very first over power play. Left it over, the first wide. The pass score in this ground, as we all know, around 60 runs. So anything more than 60, it's very, very tough to chase under the lights in dynamic sports ground. But there is a wind flowing towards the fine leg region, and the batters are pretty much aware of this. That's what he has to target, that region. There is protection, deep mid wicket. Will cut it off for 2 more runs. The power play in progress. Captain Irfan is elected to bat first. They will be looking for some big runs. 6 overs match. After 3 overs, there will be a strategic timeout. Brilliant. Brilliantly placed and beaten the man in the short square leg as getting the second boundary. What a good shot. He was in a good position to play that. Right in the middle of the bat. Almost looked like a sweep after the completion of the power play. And good fielding there in the edge of the circle. Just a single. So 14 for Nolo. CCRC Warriors, after winning the toss, elected to bat first. The 6 overs match after the power play. All the fielders have been scattered. Yes, we are getting the gallery filled here in Dynamic Sports Ground. First 150 spectators will get a chance to win a gift hamper from us. So don't forget to collect the raffle coupons.
Yes, moving on into the second over now. So good news for the spectators who are in the gallery. I'm going to announce something very interesting right after this. $16 no loss. The big shots, the biggie, the maximum. 6 number 1 of Asian Cricket League from this guys. It's too good. It's CCRC Various opening batter Khalid Pathan. Some power. He just pulled that beautifully toward the square leg, and absolutely no chance for anyone. The ball has disappeared from Dynamic Sports Ground. Khalid Pathan. Another one in the air through this deep extra cover. Underneath the field, a tough one. And the batter completed 2 more runs. As all the people who are sitting in the gallery, please, for your kind attention, if you are listening to me, if you can catch the flying ball with single-handedly, one hand catch, if you can catch the ball from the gallery with your one hand, you will get 100 reals. Another one, it's a very good executed delivery, just not allowing the batter to go underneath for a big shot after the completion of the first 2 overs. Score moved to 24 for no loss. CCRC Various. Khalid Pathan is looking really good. 22 from 10, 2 boundaries and a massive 6. So once again reminding everyone to tune into Shreelive who want to watch the live action from Dynamic Sports Ground. The first match in progress, alongside with me Mr. Chirag here as well with the Hindi commentary. Is going to join with me very, very soon. Setting up things here after 2 overs. CCRC has got a flyer. Khalid Pathan is one of the very strong batter up front. It's created already some damage for the opposition team. $25 after 2 overs without losing any wickets. CCRC Various. So perfectly executed deliveries. No signal from the umpire. To start this 3rd over, Hassan started off with the dot delivery. It's good looking shot over the umpire. It's a long on. Is very keen to go for the second run. Yes, no, and settle down for a single. It's all happening here in Dynamic Sports Ground, Qatar. What an atmosphere. Under the lights. The real high standard when it comes to cricket tournament. This is Techno Media. It's bringing the best. It's one of the finest cricket tournament. Got 20 franchises. Moving on. Right after this over, there will be a strategic timeout. Hassan to the left-hand batter. Good shot. Has he got enough? Reckon he has. That's waiting for the umpire score. Raising his hand. That's a 6. Well, it's a boundary, maybe few inches away from the boundary line. The deep mid wicket for the left-hand batter. Just frees his arm. Plenty of width was offered. Salim Gul with his first boundary.
CCRZ is cruising towards 30 runs mark without reaching to the third over. They are in a good position. It's a good partnership there. Left hand and right hand combination. The very first match. Well driven. Beautifully done. Long off. Tough job. Good fielding there. Has he done really well. Couple of runs more for the batting team. As the captain rightly decided to go for batting first as soon as winning the toss and really making it already some runs on the board, and those people who were sitting in the gallery tried to catch the ball with a single hand. Shot again. Has he got enough? One bounce. Deep square leg. Oh, has he got? Just looked like it was one ball straight to the man, then making no mistake. Deep square leg. The first wicket goes here. It's a big blow for the batting team. CCRC Warriors has lost an important wicket. Salim Gul, left-hand batter, wanted to clear that deep square leg. Just managed to get a safe hands of the fielder. They're making no mistake. Amish was the fielder there. Well judged catch. 32 for 1. Black Cat is getting an important breakthrough. Just one ball to go to complete the first 3 overs. The new batter joined in the middle for CCRC Warriors. Captain himself, Irfan, decided to walk in after the dismissal of the opening batter. Gul is back in the dugout. They got runs on the board. One ball to go. CCRC Warriors 32 for 1. Straight away swing and just maybe getting an edge. He'll retain the strike for the next over. So after the completion for the first 3 was a leg by call by umpire. CCRC Warriors 32 for 1. Now you can take a drinks break, a strategic timeout. It's the only time is allowed to have drinks during this innings. Once again, those people who are sitting in the gallery, if you are listening to me, if you can manage to catch the flying balls from the gallery. Remember, from the gallery with single hand. One-handed catch will give you 100 Qatari Riyal straight away. Sponsored by Mr. Anish Alexander, one of the cricket lovers here, is sponsoring 100 Qatari Riyal. So watch out. The gallery spectators, if you can catch the ball with single hand, not with 2 hands, so try to utilize your fielding skills if you want to win 100 Qatari Riyals. Can expect some big sixes towards that mid-wicket region. A lot of players would be targeting that region, and you've got a fantastic gallery being set. It's all happening in Dynamic Sports Ground, setting up a high standard when it comes to cricket match, tournament, Asian Cricket League, proudly presented by Premier Techno Media and supported by Just Us and Auto as the main sponsor. 20 franchises having a strategic timeout here after 3 overs. So we're going to over to Mr. Chirag is alongside with me in the commentary box. It's a beautiful atmosphere, Chirag, and it's the first time for you in Qatar. कैसे लग रहा है आपके? बहुत बड़ा माहौल. धन्यवाद श्रीलाल सर. और जिस प्रकार से ये पूरी टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, ACL सीजन 2 का ये भव्य दिव्य आयोजन और डायनामिक स्पोर्ट्स ग्राउंड से इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव एक्शन आप यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं. 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में लगे अब तक 32 रन. आप ये देखिए, ये दर्शक है, ये दर्शक इस मैच को देखने के लिए आए, लुत्फ उठाने के लिए आए. आप इन लाइव एक्शन इनको देख सकते हैं. पूरी तरह से इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं सारे दर्शक. उनका भी तहे दिल से स्वागत. ये देखिए, ये अभिवादन कर रहे हैं
एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे एसीएल की इस श्रृंखला को। गेंदबाजी में अब परिवर्तन, नए गेंदबाज को अब बुलाया गया है। ओवर नंबर 4, गेंदबाजी में अब परिवर्तन होता हुआ नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब तक का स्कोर 33 रन। निहाल गेंदबाजी के मोर्चे पे सामने होंगे इरफान और खालिद, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली है। 13 गेंदे 23 की वो पारी। इरफान, आप देख रहे हैं दर्शकों के लिए काफी सारे इनाम यहाँ पे दर रखे गए हैं। अगर आप एक हाथ से कैच लेते हो तो आपको 100 रियाल्स मिलने वाले हैं और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, और वो गिफ्ट कौन लेके जाएगा ये देखना होगा। निहाल गेंदबाजी के मोर्चे पे, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद। थोड़ा सा वहां पे फील्डिंग में कुछ बदलाव करना चाह रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा गेम को रोका गया। और देखिए अब अगर फील्डिंग की बात की जाए, फील्डिंग जिस प्रकार से लगाई गई है, अगर हम 38 सर्कल के बाहर खिलाड़ी देखें, एक लॉन्ग ऑन है, वहां पे काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये खिलाड़ी तैनात है, और डीप पॉइंट आप देख सकते हो लॉन्ग ऑफ। ये मलिंगा एक्शन है, और ये देखिए ये गेंद काफी बाहर है, और ये देके जाएगी पंजा, ये पंजा देके जाएगी। ये पहली खराब गेंद। हम हमेशा कहते हैं जब आप पहली गेंद डालने के लिए आते हो सर, तो आपको पहली गेंद अच्छे टिप्पे पे करनी है। अगर आपको जो भी वेरिएशंस करने हैं वो उस गेंद के बाद करो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अगर अच्छा बल्लेबाज है तो वो हमेशा ये चाहता है कि पहली गेंद बल्ले पे ले, और एक अच्छा गेंदबाज क्या चाहता है कि पहली गेंद अच्छे टिप्पे पे गिरे, उसके बाद वो वेरिएशन कर सकते हैं। ये आप रिप्ले में देख रहे हो जिस प्रकार से ये गेंद थी, खराब गेंद थी शेलदार सर। Absolutely. Moving on. Swing and just not getting the timing. Managed to get only a single after losing the first wicket. They got runs on the board. Chirag, it's not a bad start at all. After winning the toss, Irfan, the captain's right there in the middle. He needs to give a good company out there to Khalid Pathan. Is looking very, very good. One of the very strong opening batter who is going to perform. Looking forward for his performance throughout this tournament. Pathan, power. That's what we are expecting. हम हमेशा कहते हैं कि आपकी अगर शुरुआत अच्छी हो तो फिर आपके लिए कोई बड़े गलतियां नहीं होती आपसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एंकर रोल जिस प्रकार से दिया, ये गेंद खराब थी, पैरों पे करने की कोशिश, वहां पे फील्डर है लेकिन खराब फील्डिंग। ये मिलेंगे 4 रन, जैसे हम इसे कहते हैं भाग्य का चौका, ये लक वाला चौका है, क्योंकि फील्डर वहां पे पहुंच गए थे, गेंद हाथ में जरूर लगी थी। आप रिप्ले में जरूर देखना चाहेंगे ये क्या गलतियां हुई। और हम हमेशा कहते हैं एक एक रन काफी मायने रखता है। MS धोनी हमेशा कहते हैं सर कि एक अच्छा बल्लेबाज काफी रन बना सकता है, एक अच्छा गेंदबाज आपके लिए विकेट ले सकता है, लेकिन एक अच्छा फील्डर आपकी टीम के लिए बहुत सारे रन बचा सकता है। तो फील्डिंग पे आपको काफी गौर देना होगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए 43, लॉस ऑफ 1, ओवर नंबर 4 यहां पे चल रहा है। ये महंगा ओवर है सर, क्योंकि पहले अगर 3 ओवर की बात की जाए थोड़ा सा गेम कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद एक जो पंजा गया और उसके बाद ये चौका, एक सिंगल लेग बाय के रूप में वो आया था, तो 10 रन अब तक इस ओवर में खर्च हुए सर। Absolutely. Please remember the time as well to complete the innings. इस Big बार shot. यस, इस बार गेंद को पल्ले के पीछे पीछ लिया और जाती हुई गेंद नहीं रुकने वाली, ये आती हुई 4 रनों के लिए रन मिलेंगे और महंगा चल रहा है। निहाल की अगर बात करें, ये मलिंगा एक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन गेंद का टिप्पा बल्लेबाज के पाले में। देखिए आप फिर से रिप्ले में देखिए जिस प्रकार से ये गेंद थी, गेंद पैर जिस प्रकार से घुटना देख, तमाशा देख, ये चौका आता हुआ टेक्नोमीडिया के सम्मान में। और स्कोर कार्ड की बात की जाए 47 रन टेक्नोमीडिया की तरफ से आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस मैच में अब काफी रन आ रहे इस ओवर से, महंगा ओवर। इस बार छोटी गेंद, उसका पूरा फायदा, ये छक्का नहीं अट्टा, व्हाट अ बैटिंग। ये खराब गेंद है। आप पहले से ही हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा रन लुटाए जा रहे हैं शेलदार सर, और ये देखिए रिप्ले में देखिए क्या वो गेंद थी, गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल ज्यादा थी। बल्लेबाज खालिद कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं छोड़ने वाला, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदें खेली है, 37 पे जा रहे हैं। ये ACL की शुरुआत है, ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर आना पूरा बाकी है, क्योंकि ये शुरुआत है टूर्नामेंट की। और जिस प्रकार से खालिद ने शुरुआत की है, पठान वाला पावर इन्होंने दिखाई दिया है सर। Absolutely. What a good start for CCRZ. The 53 team 50
for CCRC. No time. We look at the replay that you are on live from Dynamic Sports Ground. Plenty of width and it all the time in this world to play that shot towards the mid wicket, clearing the boundary. Some power. Khalid Pathan. और सर जिस प्रकार से उनके कप्तान से आपने जब बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम 70 तक जाएंगे और वही बात उनके बल्लेबाजों ने दहन में रखी है और वैसी बल्लेबाजी हो रही है। ये होता है कप्तान का भरोसा। अगली गेंद फिर से फुल टॉस, लेकिन इस बार गेंद लॉन्ग ऑन पे गए, खिलाड़ी मौजूद हैं, एक से ज्यादा कुछ नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, स्कोर जा पहुंचा 54, 54 रन। ओवर नंबर 4 अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है सर, क्योंकि अब तक इस ओवर की गेंदी हुई 5, आखिरी गेंद आना शेष। इस ओवर की बात की जाए, 5 गेंद की है गेंदबाज ने और 21 रन लुटाए हैं, यानी ये काफी महंगा ओवर है। Absolutely need to finish things off. One more. बल्लेबाज लगातार आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बैठ रहे हैं घुटना टेक, और बल्लेबाज यही सोच रहे हैं कि आड़े बल्ले से ज्यादा स्ट्रोक खेले जाए। ओवर नंबर 4 यहाँ पे समाप्त होते हुए 4 ओवर की समाप्ति 55 रन। सर आप, मुझे लगता है कतर में बहुत सारा क्रिकेट हम हमेशा देखते हैं, आपने कल ही एक टूर्नामेंट खत्म किया है संस्कृति प्रीमियर लीग, और आपने सारे बल्लेबाजों को आप काफी नजदीक से जानते हो। लेकिन सर इस ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पे जो सम्मानजनक स्कोर है, जो फाइटिंग स्कोर है, वो कितना होना चाहिए? और Well, Chirag ji, on the Dynamic Sports Ground, the pass score जो आप बोलेगा तो कम से कम 60 runs, 60 runs, which is going to be the pass score. But if you remember, right after winning the toss, Irfan, the captain, elected to bat first. Maybe because of he found that wind was flowing towards the final leg region. Exactly, हमारे तरफ से आ रहा है हवा. So exactly the reason maybe he thought he'll get some run. Exactly the reason the two batters there in the middle, Khalid Pathan is striking really well after 4 overs, 55 for 1. And please remember the time is allotted to complete the innings. 4 overs के बाद the score now it's 55. They are in a very good position. So anything more than 665 is going to be very tough to chase. अभी भी 12 गेंदों का खेलाना बाकी है। अगर 12 गेंदों में 12 भी बनेंगे तो 67, 70 के आसपास जाएंगे। लेकिन खालिद का बल्ला माशाअल्लाह, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, 17 गेंदों में 38 रन। ओवर नंबर 5 बीच मैदान के अंदर। अब गेंदबाजी में कुछ बदलाव हुए, 22 रन। सलमान फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे आते हुए, सलमान ने पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे। वही सलमान अब स्लॉग ओवर्स में, हम कहते हैं कि स्लॉग ओवर्स में आते हैं तब बल्लेबाज के लिए अभी उनके हाथ में विकेट ज्यादा है, 9 विकेट हाथ में, तो और सेट बल्लेबाज है। इरफान जो अभी अभी आए हैं वो स्ट्राइक पे होंगे, और खालिद जिन्होंने 17 गेंदों में 38 की, वो नॉन स्ट्राइक एंड में सामने वाले बल्लेबाज का खेल देखने के लिए तैयार है। गेंदबाज सलमान, इस बार ये देखिए चेंज ऑफ पेस है। गेंद जिस प्रकार से हाथ से छूटी, बल्लेबाज ने उस गेंद को पढ़ा और 1 रन के साथ अपना छोर बदला, और जो सेट बल्लेबाज है खालिद, उनको स्ट्राइक पे लाया। अब स्कोर की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे नाना पाटेकर की बहुत बेहतरीन फिल्म। अब तक 56 रन बने हैं। अभी भी 11 गेंदों का खेलाना बाकी। खालिद के सामने होंगे गेंदबाज सलमान। इस बार थोड़े से बैकफुट पे गए, गेंद को अलग तौर से खेलने की कोशिश, खराब फील्डिंग, ये चौका मिलता हुआ। ये देखिए आप रिप्ले में देखो, एक बार देखो, बार बार देखो, क्या गलतियां हुई है फील्डर से। जजमेंट इतना अच्छा नहीं था। ये देखिए गेंद को जिस प्रकार से खेला, थोड़ा सा बैकफुट पे गए, फिर अलग तरीके से स्ट्रोक को खेला, वहां पे फील्डर थे, ये पूरी तरह से नाकाम, और गेंद इनको टाटा बाय बाय करती हुई 4 रन यहां पे मिलेंगे। स्कोर जा पहुंचा अब 60 रन, 60 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे, अंपायर के पास वाइड की मांग कर रहे हैं। लेकिन सर मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं कमेंट्री करता हूं, हर किसी को एक रोल दिया गया है। आपको बल्लेबाजी का रोल है, आप करें। हमारे अंपायर्स को उनका रोल बहुत ही अच्छे से निभाने आता है। और अपील हुई थी 60, लॉस ऑफ 1। ओवर नंबर 5वां बीच मैदान के अंदर। इस बार गेंद को आने दिया, फिर से उस गेंद को फ्लिक किया, देखना वहां पे फील्डर मौजूद है। गेंद को जब तक फील्ड किया जाए 1 रन। सर कहीं ना कहीं हम सलमान की तारीफ करेंगे, क्योंकि सलमान ने अब तक यहाँ पे स्कोर को थोड़ा सा हम कहे कि रोका है। वो बाउंड्री नहीं जाती तो बड़े स्ट्रोक कोई नहीं है अब तक, और गेंद इस ओवर की हुई है 4। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी सलमान की। अब तक 17 रन दिए सलमान ने इस ओवर में, अब तक 6 रन, जिसमें एक बींदी गेंद थी। गेंदबाज तैयार,
सलमान, सामने होंगे बल्लेबाज इरफान, 4 गेंदे 3 रन बना के खेल रहे। फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश, लेकिन अपने आप से इतने खुश नहीं। उन्होंने कहा कि ये गेंद इतनी अच्छी नहीं बल्ले पे आई, थोड़े से नाराज थे। 5वीं ओवर की आखिरी गेंद, क्या सर इस गेंद पे कुछ बड़ा स्ट्रोक आएगा? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब प्रेशर बनता है तो माहौल बनता है, चाहे वो विकेट हो या फिर बड़े स्ट्रोक। तो आखिरी गेंद है 5 ओवर की, लास्ट बॉल सलमान। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकले, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर उस गेंद को नहीं रोक पाएंगे। ये चौका आता हुआ टेक्नोमीडिया के सम्मान में। ओवर समाप्त होते हुए यहां पे 5 ओवर की समाप्ति, 65 रन, और औसत की बात की जाए 13 का औसत अब तक बना है। सर उनके कप्तान की तारीफ करूंगा, जिस प्रकार से आपने जब उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने टॉस सेरेमनी में कहा कि हम 70 के आसपास जाना चाहेंगे और अभी भी 6 गेंदों का खेलाना बाकी है सर जी। Absolutely. And one more thing, Chirag ji, the Salman and Irfan, they both play for the same team, Doha Rockers. And yesterday they were playing in the same team. Now they are playing against each other. And I'll tell you what, Salman is one of the predominant death bowler specialists. He came to bowl the final over of Doha Rockers yesterday. And he is the one who really changed the game. Really changed the game for Doha Rockers. And now it is all up to this auctions tournament. Asian Cricket League Season 2 brings all the fantastic players from Qatar. As Irfan rightly anticipated this, more than 70. It looks like they're going to go even more than 75. 65 for 1 after the completion of the 5 overs. 35 minutes is allowed to complete the innings, Chirag ji. Now we are left with only 8 minutes. There's a first game. Yes, you're just getting into the group. The final over. आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदे, ये दोनों टीमों के लिए विशेष है, खास करके बल्लेबाजी करने वाली टीम सीसीआरसी वॉरियर्स के लिए, जिन्होंने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय अब तक सही साबित होता हुआ। आखिरी 6 गेंदे गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज। थोड़ा सा मैच अभी भी रुका हुआ। Is to bowl the final over. 65 of 1. इजहार की पहली गेंद, इस बार शरीर पे करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पे अच्छा फील्ड, एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर जा पहुंचा 66। खालिद की बात की जाए 43 पे है और अपने अर्धशतक से 7 रन दूर है। सर ये पहला ही मुकाबला है और पहले मुकाबले में देखिए जिस प्रकार से बल्लेबाजों ने मेला लुटाए, रनों का तारीफ करनी होगी बल्लेबाज खालिद की, जिन्होंने 21 गेंदें खेली, 44 बनाए। अच्छी गेंद, फिर से जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, गेंद को खेल दिया यहाँ पे मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए और एक रन यहाँ पे मिलेगा इरफान के लिए। स्कोर जा पहुंचा 67, 66 रन। अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी। 44 पे बल्लेबाजी करे खालिद पठान। अब 44 नंबर की बात करते तो सहवाग का नंबर है और वैसे ही कुछ बल्लेबाजी हुई है आज। You can expect some big shot from this man now. बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आएंगे और इनकी पारी हुई समाप्त। 44 की पारी, 50 की ओर जाना चाह रहे थे लेकिन 44 पे इनका खेल खत्म होता हुआ सर जी। Got to feel sad for him as he was playing really well. Khalid Pathan wanted to finish things off with that big 6, get that 50 runs mark. Unfortunately finds the man in the long on region, few inches away from the boundary line. He has to depart on this occasion and Khalid Pathan will get lots of big round of applause, appreciation from the dugout, from everybody out here in the Dynamic Sports Ground. First match, 22 deliveries. They smoked some big sixes as well. 44 runs, that's what Pathan has got for the first match. As rightly Irfan was looking forward for that 70 runs mark. They are moving towards that magical number. CCRC Warriors has got a job to do when they come to defend this score. The opposition team, Amish and his boys, got some fantastic batters in the top ends. We'll wait for this. Need to complete this innings. 35 minutes all set to go.
Few more deliveries left in this over. The final one. New batter joined there. Straight away in the air. Underneath, two fielders. Tough one. Bowler himself and just missed an absolute dolly. It put down. Should have been caught. Fairuz, one of the very dangerous batters, walked into the middle after losing Pathan and CCRC Various. Looking very, very good. And they're in search of one of the highest team total. Anything more than 60 in Dynamic Sports Ground will be very difficult to chase down. It's moving on 68. अभी भी आखिरी 2 गेंदें आनी शेष है सर. दोनों टीमों के लिए विशेष है, लेकिन ये अच्छी गेंदबाजी, ये जड़ वाली गेंदबाजी है. इजहार की तारीफ करेंगे क्योंकि इस ओवर में पूरी तरह से डोमिनेट किया है बल्लेबाजों को और जिस प्रकार से गेंदबाजी की है. अब तक 5 गेंदों में पिछले रन आए हैं 4. हमने 5 ओवर की बात करें तो स्कोर था 65, लेकिन अब इस ओवर में आखिरी गेंद बड़े स्ट्रोक की तलाश. यहाँ पे हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं. पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश और 2 रन पूरे करते हुए यहाँ पे क्या ये काफी क्लोज मुकाबला हो सकता है. यस, यहाँ पे ये उच्च न्यायपालिका के पास ये पहला डिसीजन आता हुआ और उच्च न्यायपालिका आपको उसका निर्णय देगी. तब तक हम मैच की ओर बढ़ेंगे क्योंकि 70 तो बने हैं, 71 होंगे या नहीं ये हम आपको जरूर बताएंगे. So the very first time, the third umpire decision is pending here in Dynamic Sports Ground. You're watching one of the finest cricket tournament, setting up the real high standard. Third umpire decision is pending. We're going to have a very close look at. We have a third umpire here. The commentary box is going to be the decision-making process very, very soon. Whether they will reach to 70 runs mark or no. So all are waiting for that. Within few seconds, CCRC Various looking forward exactly the runs what Irfan needed. 70 runs from 6 overs. He'll have the decision very soon. Was there a run out? Square leg umpire Mr. Niaz had a very, very close look at it. Still had few doubts whether the batters reached on time to the crease. We'll be back with the decision. In case if they get out, the batters will not be able to move to 70. They will have to be satisfied with 69 runs. Here we go. We'll have the decision pending very soon. A good pick up and throw towards the keepers and good collection behind the stump by the keeper. The question is whether Fairuz was cruising toward the dangerous end. Has he reached on time? Pick up and he is banging the stump. Has he reached? I reckon it's going to be a very tight decision here by the third umpire, whether he has reached on time to complete that second run. Fairuz was running toward the dangerous end. The decision is still pending. It's a tough call. Then third umpire is taking his own time to make the decision. Was there a run out or no? As finally given, raised his finger, square leg umpire. At the first time, the third umpire decision. As the decision has been made, run out. So only 1 run conceded in the last over. And they have to satisfied with 69. When they come out to field, they need to defend 70 runs from 6 overs. We'll be back very, very soon with the chase. It's all happening here in Dynamic Sports Ground. Very first day of Asian Cricket League Season 2, brought to you by Premier Techno Media, well supported by Justice and Auto. They have the Black Hat taking on CCRC Various, 69 runs, and they come out to bat. Amish and his boys has to get 70 runs from the allotted 6.
One first match between Black Cat and CCRC Various, heading a target of exactly 70 runs from 6 overs. It's going to be very, very interesting how Irfan and his boys going to defend this. Amish team Black Cat has got some terrific opening batters in the middle order as well. It's going to be very, very interesting how they're going to start this. A tough one to chase under the lights in this ground. The pass score is around 60. They got 10 runs more than the pass score here. I need to defend this. Irfan has got a plan in his and he got plenty of runs. The first 3 overs considered too many runs. And right after that, Salman bowled really well. Just a run pause and eventually they're getting to 69. There was a third umpire decision. The final delivery. That was a run out as well. 70 runs to win the game number 1 of Asian Cricket League, brought to you by Premier Techno Media, powered by Just Us and Auto. 20 franchises are playing here. We have 4 matches to be played this evening. The next one, can't wait to see that. Techno Media is taking on KRCC. Zulfan Salim is going to arrive one more time to Dynamic Sports Ground. He is going to continue his form from where he stopped last night. He was the man of the series, was the man of the... Everything was controlled by Zulfan Salim in the Sanskriti Premier League. Best batter is more than 110 runs. He is going to arrive very soon, right after this innings. We'll have the toss for the next game as well between KRCC and Techno Media. 2 opening batters. For Black Cat is going to start the proceedings from the bowling team. It's going to be Salim Gul. It's going to take the proceedings. Amish to strike the first ball. Alongside with him, Tony Archer. Tony Archer to face the first ball, make a part, and Amish, the captain, is on the non-strikers. Here we go. First ball, 70 runs to win. Salim Gul. Straight away swing and a miss. Right on the money. Salim Gul there with the dot ball to start. "70 run is the target. It's a tough one under the lights in Dynamic Sports Ground. They need to get a good start. Well played towards the long on. Fielder there. It's a power play in progress. Only 3 fielders allowed to field outside the 30-yard circle. It's all happening here in Dynamic Sports. Got a fantastic gallery here as well. The mid-wicket region. Well played. Stanton deliver. 1 bounce racing towards the boundary. Number 1. That's what exactly they needed to strike really well in the first over. 70 is the target. They need to get more than 10 runs in the first power play. Exactly, these 2 batters out there in the middle. Very, very experienced players. For Black Cat, the captain himself. Alongside with him, an experienced campaigner, Tony Archer. Good looking shot, protection, long on region, bit of fumble, yes and no, and finally settled down for a single. So what they would be looking at around to more than 10 and 12 to 15 runs in the power play will give them a good foundation. It's a tough target to chase down 70 runs from 6 overs. Good looking shot towards that. Brilliantly done. 1 bounce at the boundary. It was in a good position when he played that. One of the favorite region. They are making it in the very first over. It's a boundary number 2. They moved to 10 already. And 1 ball to go. Black Cat has got a flyer. CCRC Warriors Irfan needs to bring his one of the specialist bowler to get a big breakthrough.
And up against two opening batters, looking good. Shot again, and no chance for anyone. Placement has been superb, right in the middle of the bat, or to the square leg region, border boundary again. That's a brilliant start. They needed to get more than 10 runs in the power play. Got what exactly they needed. They moved to 14 runs. Look at that, plenty of width was given. It just had to place it towards the vacant region. An absolutely vacant deep square leg. Got the reward for that. Placement superb. After the completion of the first over, 14 runs coming without losing any wickets for Black Cats. Need 57 more runs from the remaining 30 deliveries. It's going to be an interesting, very interesting match in progress. The first match of Asian Cricket League Season 2, brought to you by Techno Media in association with Just As an Auto. Remember, the people who are sitting in the gallery, watch out for the flying balls coming to you. If you can manage to catch the ball single-handedly with one hand, you will get a gift hamper, cash prize of 100 Qatari Riyal. Presented, sponsored by Mr. Alexander, one of the cricket lovers. Anish Alexander is giving away that 100 Qatari Riyal gift voucher for the single-handed catcher only from the gallery. Atiq to start the second over. 14 runs coming from the very first, an expensive one. And Amish on strike, the captain. Tony Archer, 9 from 4. Well done, right on the money. Atiq, the first ball, dot. Outside the off stump. The skipper out there in the middle, and from Black Cat, Amish. He has been asked to bowl first, and the opposition team has got some runs on their ball. 70 is the target. Shuffling across the crease and played towards the long off. There is a protection, just a single. Good looking shot again, long off, will cut it off. Just a single. I request the captains for the next game, Zulfan Salim, captain of Techno Media, please be here for the toss. And the opposition team captain from KRCC, Mr. Riaz Rafzal, please be here for the toss, guys. What a good shot played towards the covers region. There's no fielder there, has a long chase. Good fielding effort. The batter has a chance to come back for the third run. Good running between the wickets. I need to run really hard. This is a tough target is being set by the opposition team. 70 runs from 6 overs in dynamic sports ground. Under the lights is never easy. They got a flying start here. Two opening batters, Amish and Tony Archer. Good partnership there in the middle. Too early for the shot, racing towards the boundary, beaten everyone including the keeper. It's a welcome boundary again, they will take it. (23) for no loss. $23 for no loss.
Underneath the ball, in the air, and a tough one. 12 judge catch in the deep square leg. It was in the air for long time. What a good catch it is to dismiss one of the very strong batter. They were moving on very nicely. 23 for 1 now. In the hunt of getting to the 70 runs mark in the allotted 6 overs. They lost an important wicket. Tony Archer has to depart on this occasion. Was to clear that square leg. Just managed to get the safe hands of the fielder. They're making no mistake. First blow for the team. Black Cat needs to find another good batter to give a good company out there to the skipper. Amish is still there. He needs to play an anchor role. So getting a breakthrough, a much needed one for the fielding team. Black Cat 23 for 1. After the completion of 2 overs, Sesiasi Warriors has got 69. And another bowler comes, it's Ataur. Good looking shot protection. There's a long on region. Good fielding. A bit of fumble. Yes and no. Finally settled down for a single. Now this is going to be very interesting. This over. First 2 overs considered 23 runs. They lost the wicket. They need to capitalize on the momentum. In the air, back of the leg, tough one for the bowler. And no run, chance for a run out. A direct throw would have been very interesting. Now there's a good backing up there. Well, batsman actually fell down in the crease. And luckily, fortunately for him, there was no direct hit to the stump towards the bowling end. Survives. And once again, as a reminder for the people who are sitting in the gallery, you have a chance to win 100 Qatari Riyal gift voucher if you can manage to catch the ball. India, it's a good shot. No chance. Has he fielded and reckon it's a boundary? Waiting for the umpire's call. It's probably, yes, it's a maximum. All the way to this between long on and long offs. Cleared the boundary in style. And needed this big shot after losing the big wicket of Tony. A new batter joined there in the middle. Sahad played that phenomenal hit. That is 6 number 1 for him. Swing and a miss. It's a good comeback by the ball after conceding that 6 from the last delivery. 34-1. 2 balls left in this over. Black Cat is on a roll here. They need to chase down the 70 runs. Still require 41 runs from 20 deliveries. A very interesting chase is. India through the gap. Deep fine leg has a tough job there. Oh, missed it. Fumble and it's a boundary. The much needed one. They're moving very nicely at this moment. And remember though, the spectator, they have a family and ladies lounge here as well. The kids can also enjoy the cricket match. Right side of this commentary box, you have a family kids lounge. So those people who are coming with your family, you can put your kids in the family right there in the Asian Cricket League Season 2 as bringing the best example of setting a high standard when it comes to cricket tournament. Got a fantastic place for the family and kids to enjoy the cricket match as well. Thank you, ladies, there. Swing and a miss. It's a dot ball. Three overs have been bowled. 34 for 170 is the target.
37 more runs to win. Chirag is right now next to me. It's going to be a very interesting chase, Chirag. 34 runs is what they need. Now that they got from the first 3 overs. एक ही विकेट गिरा हुआ है अभी तक. And it's going to be very, very interesting how they're going to move ahead. Irfan has got some plenty of bowlers to defend these targets. Over to you. धन्यवाद सर. और सर हम हमेशा कहते हैं कि जब मुकाबले बड़े होते हैं तो फिर मज़ा आता है. और इस मैच की बात करें, ये देखिए आप, ये बहुत सारे आप नज़ारे देखते हैं. ये इंटरनेशनल व्यूज़ आपके सामने आप देख सकते हो. ये चांद का नज़ारा, और हमारे कैमरामैन कुशल आप तक ये पूरे नज़ारे लेके आ रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे. लेकिन सर मैच के बारे में बात करें तो मुकाबला काफ़ी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि हम कह रहे थे कि अब ये 70 हो चुके हैं, मैच इतना आसान नहीं होगा. लेकिन बल्लेबाजों ने कहा कि हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि शहाद की बात करें, अमीश की बात करें, दोनों ने 10-10 का योगदान दिया है. अभी भी वो डटे हुए हैं. और अभी भी अगर बात करें तो आखिरी 3 ओवर में, यानी 18 गेंदों में रन चाहिए 37, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 12 के आसपास है. और आज बल्लेबाजों ने जैसे बल्लेबाजी की है सर, मैंने भी कल मुकाबले देखे थे, रन ज़्यादा नहीं हो रहे थे. लेकिन आज देखिए, आज सामने भले ही पहला मैच है, पहला मुकाबला खेल रही है दोनों टीमें, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे. क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब आपके सामने बड़ा स्कोर होता है तो आप पहले ही उस स्कोर को देख के पहले ही मान ले तो कि भाई ये होने वाला नहीं है. लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजों ने कहा कि हमने विकेट जरूर खोया है, लेकिन हम मैच नहीं छोड़ने वाले, और यही होता है. और हम हमेशा कहते हैं कि अब 71 को चेस करना है, मुकाबले में जान डाल दी है. और अत्ता जिस प्रकार से 1 ओवर में 11 रन इन्होंने खर्च किए, तो उनको भी यहाँ से अब क्या वो स्ट्रेटजी रहेगी, यहाँ पे ध्यान होगा. लेकिन सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का हम फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं एसीएल की इस टूर्नामेंट में. गेंदबाजी में परिवर्तन, जर्सी नंबर 18 मोहसिन बाबू, जर्सी नंबर 8 अब गेंदबाजी के मोर्चे पे आएंगे. अभी भी 18 गेंदों में 37 की जरूरत. शहाद और अमीश, ये दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर. मैच को थोड़ा सा जल्दी कीजिए, फास्ट अप कीजिए, क्योंकि टाइम को भी मद्देनजर रखा जाएगा. ये पहला मुकाबला है आज के दिन का, और इसके बाद 3 मुकाबले अभी भी आने बाकी है. गेंदबाज तैयार. मोहसिन बाबू की पहली गेंद, इस बार कवर को भेजना चाह रहे थे, लेकिन फील्डर वहां पे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया. जब तक गेंद वहां से फील्ड होके आए, दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला. अमीश जा पहुंचे 11 पे. ओवर नंबर 4 बीच मैदान के अंदर, 35 पे 1 विकेट. एशियन क्रिकेट लीग का ये पहला दिन, पहले दिन में ये पहला मुकाबला. बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे आ रहे हैं, और उन्होंने कहा यस ये मेरा विकेट है. विकेट नंबर 2 आता हुआ, और डीजे बजता हुआ. डीजे की ओर भी जाएंगे, लेकिन हम रिप्ले में एंजॉय करेंगे डीजे. ओवर नंबर 4 बीच मैदान के अंदर आप देख रहे हो एशियन क्रिकेट लीग डायनामिक क्रिकेट ग्राउंड से जैसल सर और उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हम पे भरोसा जताया और यहाँ पे कतर में यहाँ पे लाइव करने का जो मौका दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहेंगे. थैंक यू सर. मैच की ओर बढ़ेंगे. मोहसिन, पहला विकेट इन्होंने जरूर लिया अपनी पहली ओवर में. दूसरी गेंद पे मोहसिन टू इजार, बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकले और ये गेंद काफी दूर स्टैंड में. और ये देखिए यहां में हमारे दर्शक कह रहे हैं कि मैं एक हाथ से कैच लेना चाह रहा हूं. 100 रियल्स की बात थी, लेकिन क्या वो एक हाथ से लपका गया? नहीं. ये रिप्ले में देखेंगे, ये रिप्ले में आपको देखने को मिलेगा. ओह नहीं, कैच पकड़ा ही नहीं गया था, कैच छूटा था.
अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक हाथ से कैच लेंगे तो भी आपको इनाम है, आप दो हाथ से कैच लेंगे तो आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, ये ध्यान रखें। A toss is going on here for the next match between Technomedia and KRCC, Riaz and Zulfan Salim. Another single there, and to the toss here, Riaz is going to spin the coin, and Zulfan Salim, Technomedia captain, is going to call. You can spin the coin. Zulfan, what's your call? Heads was the call, and it's tail. Riaz, you won the toss. What would you like to choose? We will bat first. He's going to bat first. All the best to Zulfan for another game. News from the center is KRCC captain Mr. Riaz is winning the toss, elected to bat first again for the next match. Over to this one. Chirag. थैंक यू सर। मैच की ओर बढ़ेंगे। 42 पे 2 विकेट। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक, गेंद हवा में जरूर है, विकेट आना चाहिए और विकेट बैक टू बैक ये विकेट आ रहे हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से विकेट गए, स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड में लगे थे 42 रन और अभी भी आने वाले 13 गेंदों में रन चाहिए 29। ये देखिए रीप्ले में देखिए, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे, कोई गलती नहीं की फील्डर ने और विकेट आता हुआ और डीजे बचता हुआ। तीन विकेट के नुकसान पे अभी भी जो रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट लगभग अब 14.50 का है, 29 चाहिए आने वाली 12 गेंदों में। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ फैजल सर बैठे हैं, वो पूरी तरह से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से मेहनत उन्होंने ली है, काफ़ी बड़ी मेहनत ली है। सिर्फ ये आज की मेहनत नहीं है, पिछले 1-2 महीने से वो जयसल सर हमारे साथ हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पूरी टूर्नामेंट को बड़े बनाने में कहीं पे भी हम जैसे हमारे साथ उनका कांटेक्ट हुआ था तब से आज तक, मुझे लगता है कल रात भी हमारे साथ थे और पूरी तरह से कहीं पे भी कमी ना रहे इसकी उन्होंने पूरी छानबीन की। आखिरी तक उन्होंने कहा कि मैं इस टूर्नामेंट में कोई भी गलती नहीं चाहता हूं और वो पूरी तरह से डेडिकेट कर रहे हैं पूरी टूर्नामेंट को और एसीएल को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाने में उनका और उनकी पूरी टीम का, टेक्नोमीडिया की टीम का बहुत बड़ा योगदान है और उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मैच अभी भी बहुत ही अच्छी स्थितियों में, अभी भी 12 गेंदों में 29 चाहिए, लेकिन ये जो डायनामिक स्पोर्ट्स का जो ग्राउंड है वो इतने रन देता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये 12-29 ये बहुत अलग मुकाबला होने वाला है। ये पहला मुकाबला है तो पहले मुकाबले में हम देखना चाहेंगे कि ब्लैक कैप्स क्या इस मुकाबले को अपने पा और खींचेगी। गेंदबाजी में परिवर्तन, Yes, swing and a miss. Another 2 overs wide. The first one I take is into his second over. Have job in their hand. It's not going to be easy now. सर अभी भी 11 गेंदे, जिस प्रकार से ये गेंदों की बात की जाए तो गेंद अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद देखिए सर, आपने अभी भी देखा होगा पहले ओवर में भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, इस ओवर में विकेट आता हुआ और डीजे बजता हुआ। रिप्ले की ओर चलेंगे लेकिन पहले डीजे को तो बजाना चाहेंगे क्योंकि म्यूजिक बजेगा तो हमारे दर्शक काफी इंजॉय करेंगे और इंजॉय करेंगे इस पूरी टूर्नामेंट को। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, छेड़खानी, विकेट आता हुआ और हमारी अगर दाहिनी तरफ आप देखें काफी सारी फैमिलीज यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं पूरी तरह से। और ये देखिए हमारे दर्शक, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो स्टैंड बनाया गया है, जो टेक्नोमीडिया का स्टैंड है, वहाँ पे काफी सारे जो इनाम दिए गए। जो हम इनामों की बात करें, पहले 150 एंट्री के लिए जो वहाँ पे लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, पहले 2 मैच के बाद जो पहला लकी ड्रॉ निकाला जाएगा उसमें से एक भाग्यवान विजेता को एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और जब आखिरी मैच खत्म होगा तब एक ड्रॉ निकाला जाएगा, उसमें से एक लकी जो भाग्यवान विजेता होंगे उन्हें गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। एक हाथ से कैच 100 रियाल्स और 2 हाथ से कैच आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। तो कहीं पे भी जाए आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है ही है। टेक्नोमीडिया ने यही कहा है कि भाई आए हो ना तो कुछ लेके जाओ।
Superb, Chirag. It's all good. It's a terrific atmosphere here in Dynamic Sports Ground. Look at the crowd who comes in very good numbers. Moving on, a take. Good looking shot. He finds the fielder there and very keen to come back for the second, and good running between the wickets under pressure. They need some runs here. They need to convert those ones into twos. That's what exactly they're doing. There's a gift voucher for the man of the match, brought to you by New Man Saloon and Food Cart Restaurant as well. So man of the match will get a lot of prizes. 45 रन 4 विकेट इस बार, ये दांडी गुल। ये हम हमेशा कहते हैं यू मिस मी आई डेफिनेटली हिट यू, गेंद अंदर और दंडी बाहर। ये सतीक यॉर्कर है। ये देखिए रिप्ले में देखिए जिस प्रकार से बल्लेबाज का स्टांस था वो काफी अच्छे खड़े थे, लेकिन अतीक ने कहा कि ये सतीक यॉर्कर है। ये देखिए अतीक का सतीक यॉर्कर, जिस प्रकार से गेंद घूमी है, जिस प्रकार से गेंद ने अपना कांटा बदला है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। सलमान आए और सलमान चले गए। सलमान ने अपनी टीम के लिए 2 रनों का योगदान दिया। आप स्क्रीन पे उनका योगदान देख सकते हो। जाएंगे डीजे की ओर, फिर आएंगे मैदान की ओर। पैंतालीस रन और आधी टीम लौट चुकी है पवेलियन। सर मैं यही कह रहा था कि आपके पास विकेट अगर होते हैं तो फिर आप मनचाहे स्ट्रोक खेल सकते हो, लेकिन जब आपके पास विकेट ना हो तो फिर थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है। अल्ताफ द न्यू मैन इन, और अभी भी 9 गेंदों में रन चाहिए 26। 9 बॉल्स रिमेनिंग, 26 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच। वो हो क्या तेज तरार गेंदबाजी है। बल्लेबाज को क्या गेंद दिखी ही नहीं, इतने जोर से उन्होंने गेंदबाजी की है। और देखिए सर, इनकी अगर बात की जाए, अतिक के हम फैन हो चुके हैं क्योंकि सारी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करने की कोशिश उन्होंने लगातार की है। और अब तक इनकी अगर गेंदबाजी का एनालिसिस देखें, 10 गेंदों में 12 रन और 3 विकेट महत्वपूर्ण लिए हैं। अतिक ने तारीफ करेंगे, इनकी तारीफ करनी होगी इनकी। अच्छी गेंद, अंपायर के पास अपील जरूर लाउड कर रहे हैं, लेकिन अपील में उतना दम नहीं। ओवर नंबर 5 चलता हुआ स्कोर कार्ड की बात की जाए, 45 रन 5 विकेट। लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर, 7 गेंदे, रन चाहिए 26। आखिरी गेंद फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में, ओवर समाप्त होता हुआ। क्या तारीफ करे इस गेंदबाज की, 12 रन दिए, 3 विकेट। और ये कंजूस वाली गेंदबाजी है सर, क्योंकि अतीक ने 6 के औसत से गेंदबाजी की है, पूरी तरह से मैच को पलट दिया है। ये मैच बदलने वाला ओवर था सर। Absolutely, as a turning point in this game, and absolutely a brilliant performance with the ball from Atik. Has conceded, well, taken 3 wickets in the very first game. That exactly they need this big match player like Atik to come back very strongly. Irfan has trusted the ability on this main weapon he has in his bowling lineup. It's 26 is very, very tough to get from the remaining 6 deliveries. Never say anything in cricket. There's absolutely no wind now. There was a wind flowing towards the commentary box, the fine leg region. As in quiet atmosphere here, they need to play really well. इसके बाद जो मुकाबला होगा वो भी काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस मैदान में जिनके बल्लेबाजी का जलवा हमने बहुत बार देखा है, वो बल्लेबाज इन एक्शन होंगे। लेकिन अब गुल आखिरी ओवर लेके, गेंद है 6, रन चाहिए 26। और ये अच्छा मुकाबला है, ये अच्छा टूर्नामेंट है। और जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट की बात की जा रही है, ये कतर का एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तैयारियां की है, तैयारी को अंजाम दिया है, तारीफ करनी होगी पूरी टीम की। इस बार गेंद हवा में जरूर थी, नो मैंस लैंड में जरूर गिरी है। पहला रन तेजी के बाद आगे, दूसरे की कोशिश और 2 रन पूरे। 1 को 2 में कन्वर्ट करना चाहिए। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आने वाली 5 गेंदों में रन चाहिए 24।
5 गेंदे 24 रन, बड़े 4 हिट इस मैच को बदल सकते हैं सर जी। और मेरे हिसाब से हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट में कोई भी भविष्यवाणी नहीं होती है, क्रिकेट में हमने हमेशा कहता है कि पलक झपकती ही परिस्थितियां बदल जाती है। तो ये बड़े 4 स्ट्रोक की तलाश, गुल फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकले, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, वो वहां पे थोड़ा सा फंबल होते हुए, लेकिन 1 रन को 2 में कन्वर्ट होना चाहिए और 2 रन मिलेंगे। अब इक्वेशन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आसान नहीं होगा, क्योंकि आखिरी 4 गेंदों का खिलाना बाकी है। अतीक वहां पे थे, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ उनके हाथों से, और क्या उन्हें वहां पे कुछ चोटिल हुए वो देखना होगा। यस, फील्डर को बदला जा रहा है, या यस थोड़ा सा वहां पे मैच रुका हुआ है। They still need 22 from the remaining 4. Can't say anything now. That's two big shots can turn this game. For Black Hat, they are in the hunt now. Here we go, Gul. Swing and a miss. A much needed dot ball. It could be a match turning point. A moment with that dot ball. A golden one. 49 for 5. 3 deliveries remaining. 22 runs to win. Shot is definitely won. There is protection long on. Bit of fumble. I'll test take a single. Technically, it's not possible now. 50 runs for Black Cats. Isn't it too late, Chirag? सर काफी दूर निकल गया अब ये मैच, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट की भी बात की जाए, 2 गेंदों में 21 रन, अनऑफिशियल डिलीवरीज मैच को बदल सकती है, लेकिन क्या गेंदबाजी है, लाजवाब गेंदबाजी गुल की। और ये अभी भी बल्लेबाज कह रहे हैं कि भाई मेरा नंबर कब आएगा वो ये कह रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी गेंद आनी होगी, लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड इनिंग। और ब्लैक कैट अब इस मुकाबले से काफी कोसों दूर, क्योंकि आखिरी गेंद में चाहिए 21 रन। लास्ट बॉल, इस बार गेंद हवा में जरूर है, गेंद को देखते रह गए और गेंद ने कहा टाटा बाय बाय। गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, 50 का आंकड़ा पूरा जरूर किया, लेकिन 16 रनों के साथ सीसीआरसी वॉरियर्स ने इस मुकाबले को जीता। और जो कप्तान का भरोसा था सर, जो 70 के आसपास जाने का, वो भरोसा बल्लेबाजों ने पूरा किया। और इसी तरह से पहला मुकाबला इस